Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. So last class we have started with immune based reaction or diseases, and in which we have done with hypersensitivity type 1 and type 2. Okay, let's start. Type 3. Okay. Type 3 is also known as immune complex diseases. In this type, tissue damage results from antigen antibody complexes. So टाइप 3 में जो भी टिश्यू डैमेज होता है इट रिजल्ट्स फ्रॉम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट सर्कुलेटिंग और टिश्यू डिराइव्ड एंटीजन. तो जो भी सर्कुलेटिंग या टिश्यू डिराइव एंटीजन है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं. द रिजल्टेंट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस में बी डिपॉजिटेड इन द टिश्यू where they inflict damage by activating complement with a resultant influx of neutrophils and macrophages which in turn release proteases and ऑक्सीजन रेडिकल्स. तो क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं दे गेट डिपॉजिटेड इन द टिश्यू ओनली, एंड उसकी वजह से क्या होता है, दे एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि इन्फ्लक्स करता है. इन्फ्लक्स मतलब अंदर आना ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेस, और वो क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं प्रोटीएजेस और ऑक्सीजन रेडिकल्स. Deposits tend to occur in the area of high pressure and filtration, such as kidney, and in diseases in which there is abundant antigen, such as infection and autoimmune diseases. तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 3, ये मेनली जहाँ पे हाई प्रेशर और फिल्ट्रेशन जैसे किडनी जैसे ऑर्गन में होता है, या फिर ऐसी डिजीज़ेस जहाँ पे एंटीजन ज़्यादा है जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ेस हुआ. These include leprosy, bacterial endocarditis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, dermatomyositis, and various forms of vasculitis. Okay. Now coming to type 4. Type 4 is cell-mediated or delayed hypersensitivity reaction. It is the antigen reactive cells, not antibodies, that are involved in cell-mediated hypersensitivities. Antigen reactive cells, okay, not antibodies. Antigen is processed by macrophages or Langerhans cells and presented to antigen-specific T lymphocytes. The activated T cells release lymphokines which recruit and activate lymphocytes, macrophages and fibroblasts. Injury is induced by T cells and macrophages. So these are the cells responsible for this cell mediated or delayed type of hypersensitivity, and remember it is not antibody, they are antigen reactive cells. Okay, so macrophages or Langerhans cells are presented to antigen specific T lymphocyte. Antigen is processed by macrophages or Langerhans cells. It is processed by both these two cells and they are presented to antigen specific T lymphocytes. Okay, so ये तीन cell macrophages, Langerhans cells, T lymphocytes plays a role in this type of hypersensitivity. These reactors are seen in tuberculin hypersensitivity and granulomatous disease such as sarcoidosis and tuberculosis. Other example of cell mediated hypersensitivity, so ये basically जो अपना ट्यूबरक्यूलिन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन या ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ होता है जैसे सार्कोइडोसिस या ट्यूबरक्लोसिस उसमें दिखता है. And other example of cell mediated hypersensitivity include lichen planus and contact hypersensitivity, in which Langerhans cells within the epithelium play a significant role. तो या तो ट्यूबरक्लोसिस में दिखेगा या सार्कोइडोसिस या तो लाइकेन प्लानस या कॉन्टैक्ट हाइपरसेंसिटिविटी. कॉन्टैक्ट हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होता है, Langerhans cells within the epithelium play a significant role. Okay, that's all about hypersensitivity reaction type 1, 2, 3, 4.
ओके, हम बता दिए क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे क्या. Now we'll be starting with different topics of this immune based disease only in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.